ओम शांति अव्यक्ति परिवार में Shanti, आपका we स्वागत welcome you in है। Avyakti family. Today is day 3. भगवान वाच Shiv जन्म Bhagwan Vach, a Janma means beyond birth and death. संपूर्ण पवित्रता व स्वच्छता को धारण करो। Imbibe such a ब्राह्मण personality, पवित्रता की ऐसी imbibe वस्तुओं complete को धारण cleanliness करो and purity जो in आकार Brahmin life. Imbibe स्थायी such a साकार personality of Brahmin life that your energy, time, and thoughts are all used in a worthwhile way. Nothing should be wasted. Do not engage your mind or intellect in trivial matters. Whilst hearing impure things, do not listen to them. See, but do not say. Just as when you are walking along a street and you don't notice anything, that has nothing to do with you. You just walk along whilst continue to consider everything to be a sight scene. So, की बात नहीं है। do neither listen to nor see anything you hear or see that has nothing to do with you. हो देखते हो आपके काम की नहीं है तो सुनते हुए नहीं सुनो, देखते हुए नहीं देखो। अभी हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे। Now we listen from Mohinididi. ओम शांति। Om Shanti. सवेरे सवेरे उठे, When we woke up early in the morning, Baba is the point of light. पर हमें पता है कि चैतन्य And do ज्योति we बिंदु know है, that he उसमें is चेतन। a life in it? तो जब गुड मॉर्निंग करती है, So when we say good morning to बच्चों को देख Baba, के मुस्कुराती है। so then he smiles at us, he looks at us and smiles at us, the children. And in the morning, the point of light, Baba smiling feels as though गुड मॉर्निंग भी कर रहे हैं, मुस्कुरा Baba is telling us good morning also, smiling also. So I liked it very much. किस प्रकार In the के नेत्र हैं, point of light also, what kind of eyes are there? Those who are seeing हम us. लोगों को तो ये नेत्र हैं, We have these परंतु physical ज्योति आप eyes, ज्योति बिंदु तो देख but नहीं सकते ना। you cannot see ये तो the बाबा point ने of हमको light through ज्ञान these eyes. Baba has given us the दिया है knowledge, कि बिंदु में and क्या क्या he है। has also given us the knowledge that what is there in the point of ज्ञान light. का सागर है, पतित पावन है, He is the ocean of सर्वसमर्थ knowledge, है। he is the तो वो क्या purifier. होने के We have कारण all the से relationships with him. So because we have बिंदु this रूप में जब knowledge, बाबा को याद करते हैं when we तो remember हमारा Baba in the हृदय का point of विदारक light होता form, है। so we experience लेकिन क्यों आवश्यक है him. सद्य रूप में? So why it is क्योंकि हमारा important भी that we शरीरभान experience जो in है point of light? Because our body वो जैसे कि consciousness अपने को देह से अलग कर पाते हैं is as though we कि can बाबा separate it भगवान from है। ourselves from the body. तो So मुझे if भी Baba is सद्य the रूप point of में light, बाबा को याद so करना I है। can also be point तो of जब light and बाबा remember साकार Baba. स्थिति की बात करते हैं So Baba, when he उसके talks about लिए the जो incorporeal form, में बाबा की याद बहुत then आवश्यक हो जाती है। in that to ऐसा remain in मुझे the point of light stage is very important. बहुत Today बार I देखा है experienced that, एकाग्रता में and I saw बहुत that मदद मिलती है, when you देहभान concentrate, से you get a देखने lot में of help. मिलती है। You और get फिर help जब in staying away from जो this body. आज भी And मनन soon, चिंतन की बात हुई when we are तो बुद्धि churning, को फिर when we से were talking about churning, सब so तरफ से हटा के बिंदु रूप I, में we have to remove our intellect from everything else ज्योति बिंदु and में। stabilize yourself in this point of light तो form. आजकल बाबा बहुत ही ड्रामा की सीन So है। Baba is nowadays explaining us about the छोटी trauma छोटी बातों में scenes. मन बुद्धि को बिजी नहीं Little, रखना है। little, in little, little और things, मुझे don't लगता keep है your कि mind यही and हमारा intellect busy. अगस्त And है। I feel this is our final ड्रामा को तो effort. रोक नहीं सकते हैं, We cannot stop the तो drama. सीन्स भी आएंगी और So अंतिम scenes समय will है come, and this is the final भी time. बहुत चुप होता रहता है। So we have to settle our परंतु accounts a ऐसा होते lot. हुए भी
But in spite of being in all बाबा ने this, हमको ये जो होमवर्क दिया है, Baba, what homework he has और given बहुत us. मुझे ये चला कि मनन क्यों कहता है बाबा And I felt कि that why वर्षों does को भी तो Baba say रिप्लेस करने churn के लिए it? स्टॉक चाहिए ना, तो Because we मनन need की to रचना है replace खजाने जगत the के श्रेष्ठ संकल्पों का, we need a stock to जल्दी replace से that. वेस्ट So there's करने lot लगे of थे ना, treasure we have to व्यर्थ accumulate. चला जाता है, So when we और व्यर्थ think नहीं जाता क्योंकि हम elevated, वेस्ट so को waste रिप्लेस goes नहीं कर away. पाते। We have to तो अंदर replace में जैसे this कहते हैं कि waste with the शक्ति बढ़नी elevated चाहिए, thoughts. जैसे So जैसे the हम internally भगवान that the हमारी power शक्ति should that बढ़े, should be filling. The more and more व्यर्थ we नहीं सोचें और think व्यर्थ elevated, सोचने से we should feel स्टेज powerful. बदलेंगे। And तो अगर हम स्टेज पे soon बदलेंगे now we तो should स्थिति भी change the बदलेगी। waste to elevated. And if we तो think कल का elevated, then कार्य only the कल का ही situation will रहेगा change. मुझे लगता है। And that तो मैं तो paper अपने of the पीछे waste will keep on going अंडरलाइन till the करता end. हूँ So I am underlining for कि myself, for my भगवान ऊपर effort, हमको क्या that करना है, दुआ however क्या करना है। anybody else's feelings are, I shouldn't think सब about that. सबकी I लाइफ should में मैं have खड़ा हूँ good wishes to और everybody. आज हम Everybody लोग बाबा should को benefit from Baba's अजन्मा कहते हैं vibrations. ना, So Baba is Ajanma, तो means हम लोग beyond birth कई and तरह के death. जन्म होते हैं। There are many kinds of types of birth we संगम युग take. पर हमारा ब्राह्मण जन्म है, In the confluence age, ब्राह्मण we का have अर्थ a होता है Brahmin वंशावली। life. So Brahmin life is we are शिव born बाबा ने by the हमें mouth born ज्ञान by दिया, Brahma. Shiv हमको Baba बताया gave knowledge to Brahma कि and हमारा Brahma gave नया us knowledge. ईश्वरी जन्म We होना है। heard that and ours is a new life, जब godly हमने life. आत्मा समझा We consider तो ourselves as सभी soul, संबंधों से आत्मिक संबंध हो गया and then और with शांति everybody का else, our स्वरूप हमारा relationship is of soul. शांति में Purity ईश्वर is my विराज रहे। original अनादि स्वरूप को समझ लिया, nature, and we understood फिर that I am जो the संगम युग eternal के soul. बाद सतयुग का जन्म होता है, And then after that, तो after एक the जन्म confluence age, when जो we take प्राप्ति birth in the का है golden age, वो so whatever वर्तमान में attainments बाबा का जो we बदला are दिया हुआ है getting, वो so साझादारी present होती है। at the present time, whatever यहाँ we ऐसे effort we जन्म are ग्रहण नहीं making, करते ना, so वहाँ की जो those are our rewards. Over there, we are not doing संगम any युग elevated के task. कर्मों की जो In कमाई the है confluence जो age, प्रारब्ध whatever है elevated या actions फल we है, do, that is our income उसको that we जन्म do, जन्म that is का the लेते reward हैं। we get in the तो golden age. जीवन मुक्ति कहते So हैं, we call it, जीवन the life मुक्ति is जन्म called that it is a liberation in life. वो सतयुग में होता है, Liberation in life is जहाँ in कोई golden बंधन age, नहीं है, जन्म है where there are no वहाँ पे bondages. कोई कर्म Birth is बंधन there, नहीं, but there is क्योंकि no सब कुछ bondages in अगर action, आत्मिक रूप से because everything on this in this समझ जाते confluence हैं age, वो we are in पवित्रता soul, जागृत we होती है, learn to be soul conscious stage जो and have हमारे आत्मिक relationships पवित्रता in this as a जैसे बाबा soul मम्मा से conscious stage, समझ and जाए it's pure तो relationships, उनकी as mama and पवित्रता baba's जाग जाता relationship है और हम was शुद्ध based बन on जाते हैं। purity, and our उस everybody of बाबा ours के ज्ञान को relationship is शरीर में also आते based हैं on purity. After तो that we come कर्मों to का the copper बंधन age and टूट iron जाता age. है, Then the तो bondages जन्म of का action सुखी start. जीवन We बंध take जाता है। birth, but then तो it जैसे is बंधे called हुए हैं, bondage, as though we तो are यहाँ पर भी tied, we कर्मों are के जरिए bonded. बंधे हुए हैं, Here also we see that we are हमारा tied, कोई कर्म but बंधन है if there is तो any बाबा की bondage, जन्म we है, these are our accounts we have to बाबा settle. हम लोगों की तरह, हाँ, Baba, जैसे हम आत्मा गर्भ में प्रवेश करके as जन्म we लेते हैं, soul बाबा uh, ऐसा जन्म नहीं लेते enter हैं। the womb and take birth, but बाबा Baba का doesn't जन्म take है birth like जिसको that. अवतरण कहते हैं Baba's Baba कि incarnates. आत्मा तो आती है, He doesn't आकर enter a womb. घर The में जन्म soul लेती है, comes, लेकिन बाबा other souls come ब्रह्मा into a बाबा में womb and take प्रवेश birth, करते हैं but Shiv Baba enters और Brahma बाबा Baba, को इतनी स्वतंत्रता and है that is called incarnation. कि And वो Baba एनी has टाइम that much बाबा freedom फिर आते हैं that जाते as हैं, long as Baba wants, he कोई comes, then भी he आत्मा goes, he ऐसी comes and परमधाम goes. से आके वापस So तो नहीं जा सकती ना, any soul that comes from the from परंतु Paramdham, from परमात्मा की soul world, कृपा doesn't से go back. But the वो आके वापस जा supreme सकता है, soul's और part is that जो किसी भी the आत्मा supreme soul comes and goes, और and उसके any बाद other फिर soul doesn't has जो this सूक्ष्म part. देवताएं हैं And then उसका the फिर सूक्ष्म रूप deities धारण in the करके subtle region, सूक्ष्मता so में पाठ बजाना, and they और जो हमारे incarnate as संत हैं, subtle धर्म form and स्थापक हैं, play their part. हाँ, And उनका then भी our ऊपर से prophets, आते those who रहते are हैं establish the religion, the soul और comes ऐसे from up बनी above, रहती है। but doesn't stay all the time. इस पर थोड़ा विचार करने की बात है कि वो We ऊपर से need आते to हैं reflect on this. They धर्म come स्थापना from में up above and establish the religion, और दो आत्माएं एक शरीर में and पाठ बजाती हैं, two souls play जैसे a क्राइस्ट part in का one body. जीसस है, Christ जीसस फिर क्राइस्ट is जाते हैं,
Jesus. So with Jesus there is Christ. Christ comes in Jesus' body. So how the Supreme Soul comes on this drama stage and plays his part. So think about this, reflect on this, and what is our aim at this time? I, the soul, whatever my accounts are, whatever my bondages are of action, bondages are. I liked it yesterday, Baba said that you should have a power to accommodate and power to little things come in front of us, but it is not like that. Our Brahma Baba was there, Dadis were there. A lot of time they spent in listening. And there were many things that came into doing task. Dadi Prakashmani was there. We saw Dadi Janki also. How she did her effort. So that way in my life also, I have to maintain my zeal and enthusiasm, the courage. As Baba crossed, as Dadis also crossed all this. So we will also do it. And I have also kept this aim. So more and more, I should accumulate elevated thoughts. I should keep more Murli points in my intellect. And as much fast you can, we should change the waste into elevated. So this is our final effort. And we all have to cross this paper. So we will stay in Baba's remembrance, like how Baba is beyond. And I, the soul, also have to make this effort. How Baba is beyond birth and death. So I also have to make effort. I have to live in this life and remain free from waste and bondages and experience the inheritance of liberation and liberation in life. So Brahmin life is an elevated life. Om Shanti. शिव भगवान उवाच Shiv Bhagwan Vach, God Shiva's versions. A Janma that is beyond birth and death, you souls come down here and enter a womb, whereas I have come and entered this old body. I do not enter a womb. I simply incarnate. This is known as a divine birth. यह है 29 मार्च 2000 की मुरली. This is 29 March 2000 Murli.